Yes. Wave optics and EMF, question number 1. What will be the answer of this question? This assignment I will post it in the group today. What is the condition for coherent sources? Sources has to be coherent. Phase difference should be constant always, है ना? Yes. तो phase difference constant किसमें है? इसमें C. They should have the constant phase difference at any point where they interact. It should not change for any moment even. For that, they should be obtained from the single source of light. Therefore, automatically wavelength will be same. And even frequency will be same. Because they are coming from the same coherent sources. That's the condition. Next question 2. Ratio of intensity of two waves are given. They are producing interference. The ratio of maximum to minimum. Already we have discussed this formula. I max upon I minimum. मैक्स में प्लस आता है बीच में. यहाँ पर I1 is 9. इसको 9x ले सकते हैं, इसको x ले सकते हैं. x being the common ratio will get cancelled, तो डायरेक्टली पुट कर देते हैं 9. √9 plus √1 √9 minus √1 whole square. This will be 3 plus 1 4 or divide by 3 minus 1 2. 4 by 2, it will be 2 whole square. 4:1. C option. All right. Next one is, anything you want to ask here? No. All right. Rest of the questions are almost similar. Two coherent monochromatic light beams of intensity I and 4I are superimposed the maximum and minimum. कितनी आएगी मैक्सिमम यहाँ पर? अंडर रूट के अंदर कितना आएगा? रूट ऑफ आई ये 2 रूट ऑफ आई नाइन आई. मिनिमम में कितना हो जाएगा? माइनस होगा यहाँ पर, रूट है तो आई आ जाएगा. सी ऑप्शन. मिनिमम में देखते हैं मिनिमम का कितना आ रहा है. आई माइनस 2 रूट ऑफ आई स्क्वायर माइनस ऑफ रूट का होल स्क्वायर
that is I. Minus square will become plus. तो C option दिख रहा है ना? If you don't, you can do it with that formula also. Under root of nahi, that these you can use this formula also. This relation comes from the main formula. IR is equal to मैक्सिमम के लिए ये 1 हो गया. This is I plus I 5I plus 4I आ जाएगा यहाँ पर, तो 9 आ जाएगा. ठीक है. तो एनी ऑफ द फार्मूला यू कैन यूज. डायरेक्ट आई मैक्स का हमने बनाया हुआ है, या फिर गो बैक टू द बेसिक फार्मूला. ठीक है. Fourth one is this. Two beams of light having intensity I and 4I interfere to produce the fringe pattern on the screen. The phase difference between the beams is pi by 2 at a point A and pi at a point B. Then the difference between the resultant intensity A and B. फेज डिफरेंस दिया है आपको फर्स्ट इक्वेशन में. कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? कैन वी यूज आई मैक्स एंड आई मिनिमम? नो. मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पर कंडीशंस आर डिफरेंट. यहाँ पे फाई की वैल्यू दी है, तो वी हैव टू यूज द बेसिक रिलेशन जिसमें cos फाई आता है. तो फर्स्ट केस में cos पाई बाय 2 विल बिकम 0. तो I at A will be, intensity at A will be I plus 4I, 5I हो जाएगा. सेकेंड केस में cos pi will be -1. Thing will be, देखो कितना आ रहा आंसर. कैन यू कंप्लीट दिस? I think second case में it is going to be I है ना. What is the answer coming? Are you there? Yes, sir. 5I minus I आ रहा है. 4I आ रहा है आंसर. यहाँ पर 5 दिया है pi by 2. cos pi by 2 becomes 0. तो ये आपका I plus 4I, that is 5I. और सेकंड केस में दिया है pi at B. तो IB will be I plus 4I minus 4I. Therefore, difference ऑप्शन नंबर बी. ठीक है.
Any difficulty here so far? No. I think this is more or less is your solving the equations only. Trigonometry ज़्यादा दिख रही है इसमें है ना. You have to remember the values of cos 90 is 0, cos pi is -1, and cos 0 is +1. Cos 0 +1, cos 90 is 0, cos pi, that is 180, is -1. These three values you have to remember in this chapter. Two waves are given. Amplitude of resulting wave will be amplitude निकालना है. एम्पलीट्यूड के लिए वेक्टर वाला फार्मूला अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi. a1 is given. a1 कितना है? a1 is this 4, a2 is 3, and phi is pi by 3. So under root of 4 square plus 3 square, 25 plus 2 कैंसिल हो जाएगा, और plus 12, root 37. Root 37 is very close to 6. Can you see it? Yes, sir. Okay. So this is just your vector addition वाला formula रहता है. They are superimposing resultant amplitude is vector sum of the individual. तो vector sum के फार्मूले से हम ऐड कर लेंगे, वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे. What will be the intensity ratio here? I1 by I2 क्या होगा बोलो, बताओ चलो. A1 by A2 का स्क्वायर, which is 4 by 3, the whole square, 16 by 9. समझा? I1 इंडिविजुअल, उनकी जो इंडिविजुअल इंटेंसिटीज है उनका रेशो पूछो. और आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम भी निकाल सकते हैं. नहीं, आई मैक्स अपॉन निकाल सकते हैं, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम नहीं है, बट कहीं ना कहीं पे जब यहाँ पे मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए. तो ये 0 हो जाए. मिनिमम के लिए कितना होना चाहिए, यहाँ पर पाया जाए. So that also we can find out. है ना? This phase difference is depending upon the location on which point they are interacting in. Center of the screen, this becomes 0. When we move up or down, then phase difference starts coming in the wave. We'll move away from that central maximum. Phase difference starts because of path difference. IMAX दिया है
नहीं दोनों रेशियो दिया है I max upon I minimum is 25:1 which will be equal to under root of I1 plus I2 upon under root of I1 minus under root of I2 का होल स्क्वायर. लेफ्ट साइड में 25 आएगा 25/1 अंडर रूट ले लेंगे तो 5 बचेगा राइट साइड का स्क्वायर हट जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड रूट I1 बाई रूट I2 की वैल्यू आ जाएगी उसको स्क्वायर कर लेंगे तो विल बी हैविंग रेशियो ऑफ I1 एंड I2. I1 and I2. सिक्स बाई टू आ रहा है क्या 3 आ रहा है क्या 3 विल बी 6/4 आएगा ना रूट में that will be 3/2 9/4 आ रहा है. Let's see what is the answer. I max n upon I minimum का फार्मूला पुट किया यहाँ पर दिस रेशियो इज गिवन 25:1 रूट ले लिया हमने और इधर का स्क्वायर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो रूट I1 बाई रूट I2 इज कमिंग 3/2 6/4 विल मेक इट 3/2 और फिर इसको स्क्वायर करना पड़ेगा 9/4 I1 बाई I2 विल बी 9/4. तो यहाँ पर 6/4 आएगा फिर उसको रेशियो 3/2 बचेगा which will be 3/2. All right. Yes, sir. Okay. इसका आंसर है सी. इसका आंसर सी. What about this? अब इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे आई मैक्स आई मिनिमम बाई आई मैक्स बी केयरफुल. मिनिमम अभी तक हम लोग मैक्सिमम मिनिमम रेशियो मैक्सिमम बाय मिनिमम कर रहे थे बट यहाँ पर रेशियो जो है मिनिमम इज फर्स्ट डिवाइडेड बाय मैक्सिमम तो रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 अपॉन रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर. तो I1 I2 आपके पास है कैसे निकाला हमने फर्स्ट रिफ्लेक्शन में on every reflection 25% is reflected. यहाँ पर 25% means 25/100 that is 1/4 I/4 I is the incident light 75% ट्रांसमिट हो गई उसका 25% रिफ्लेक्ट हुआ 1/4 हो जाएगा फिर से और उसका 3/4 बाहर निकलेगा तो 9/64. तो I1 I2 are given. So what will be the ratio of I minimum वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है आपको. Put the value and solve it and tell me what is the answer coming.
1 by 8 है ये. 1 by 7. 1 by 49 आ रहा. 1 by 49 is the answer. अंडर रूट के अंदर है ये. 1 by 2 minus 3 by 8 का 1 by 8 आ रहा. 1 by 2 plus 3 by 8 का 7 by 8 आ रहा है. तो यहाँ पे पुट कर देंगे 1 by 8, 7 by 8, 1 by 8, 1 by 8 कैंसिल हो गया. 1 by 7 का होल स्क्वायर इज 1 by 49. ठीक है. क्लियर. Yes, sir. What about this question? ये S1 S2 के बीच में डिस्टेंस डी दी हुई है. One ray will come directly from here, other will come and it will come like this. O should be dark. यहाँ पे पाथ डिफरेंस lambda by 2 हो जाए. मिनिमम डिस्टेंसेस के लिए फर्स्ट कंडीशन ली जाती है. फर्स्ट कंडीशन ऑफ डार्कनेस इज lambda by 2. तो पाथ डिफरेंस, ऊपर का पाथ डिफरेंस और डायरेक्ट पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू lambda by 2 फॉर डार्कनेस. तो पाथ जो है ऊपर से पाथ कौन सा है? S1 प्लस S1O माइनस SS2 plus S2O should be lambda by 2. For O to be dark. मिनिमम डिस्टेंस पूछा है ना. मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डी. ये कितना आएगा मिनिमम? मिनिमम के लिए फर्स्ट डार्क मिलना चाहिए. दैट इज lambda by 2 है ना. सेकेंड डार्क इज 1.5 lambda पर होता है. फर्स्ट डार्क इज एट 0.5 lambda. हाफ lambda हाफ lambda कम होता है. फर्स्ट मैक्सिमा इज एट lambda है ना. और डिफरेंस शुड बी lambda. मिनिमम में आधा कम होता चला जाता है. 0.5 lambda है ना. दैट इज lambda by 2. lambda by 2 के लिए फेज डिफरेंस भी 180 डिग्री. 180 डिग्री मींस आउट ऑफ फेज डार्क फ्रिंज मिलेगी वहां पर. तो ये
पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आएगा, दिस इज डी, दिस इज डी, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ डी प्लस डी, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये 2 टाइम आइडेंटिकल डिस्टेंस है ये, इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ hypotenuse SS1, so it will be root of d square plus d square होल का रूट, और ये डायरेक्ट दिया रहता है, ये 2D है। यहाँ से क्या करना है हमें, d बाहर निकलना है इसमें से, 1 प्लस डी स्क्वायर बाई कैपिटल डी स्क्वायर रूट है, तो 2D कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे, इसमें से और इसमें से, यहाँ पे क्या बचेगा, नहीं उससे पहले हम बाइनोमियल लगा के पावर को अंदर शिफ्ट कर देते हैं, 1 प्लस 1/2 पावर आगे आ जाएगी, बिकॉज डी बाई डी, स्मॉल डी बाई कैपिटल डी रिमेन्स वेरी स्मॉल हियर, ये पावर आगे आ गई, यहाँ पर 1/2 आगे शिफ्ट हो गया, इन सेकेंड टर्म विल बी वेरी स्मॉल ड्यूरिंग दैट सेकेंड टर्म एंड फर्दर टर्म। अभी 2D ले लिया हमने कॉमन, 1 प्लस 1/2 डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया कैंसल, 2D को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2D डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर लैम्डा बाई 2, यहाँ से एक डी चला गया, नीचे 2 भी था, 2 भी चला गया, यहाँ से हमें डी मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये तो उधर गया, तो लैम्डा डी बाई 2 which is C option. Can you see? फिर से देखो ये पाथ डिफरेंस, ये वाला पाथ और ये वाला पाथ, इसका डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, तभी O विल बी द फर्स्ट डॉट। तो ये हमने ये अपना पाइथागोरस थ्योरम से निकाली, ये D है, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर, और 2 टाइम्स है, इधर भी है इधर भी, इसलिए 2 टाइम्स किया, और ये भी D एंड D 2D है, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, अपना बाइनोमियल थ्योरम, पावर आगे आ जाती है, पहले डी हमने बाहर निकाला, यहाँ से अंडर रूट है तो डी स्क्वायर को बाहर निकालना, अंडर रूट है तो डी रह जाएगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया, तो हमने 2D कॉमन लिया, अभी हमने बाइनोमियल से पावर को अंदर शिफ्ट किया, 2D कॉमन भी लिया, ये कैंसिल हो गया, इसको फर्दर सॉल्व करने से ये आ गया। Alright. Next one is this. Ninth is about the fringe width. ये आपको लैम्डा दिया है, ये स्मॉल डी दिया है, ये कैपिटल डी दिया है।
fringe separation is lambda d by d. After solving it is coming 1 mm, option is C. Something is wrong in the minus. मीटर में आएगा 10⁻³ मीटर. That can be written as 1 millimeter. Are you there? Am I audible? Can you hear me? Yes, sir. Okay, then respond fast. I was just worried. Moving on to the next question. Slit width का ratio दिया है, which is also equal to I1 by I2. Both are directly proportional. I1 by I2 will be the ratio of slit width. That will be 1 by 9. And we have to find out the minimum ratio of I max upon I minimum. ऊपर minimum है ना, तो ऊपर आएगा √1 प्लस माइनस माइनस आएगा √9. तो 1 - 3 -2 upon 4 है ना, 1 by 2. तो 1 by 4 आ रहा है, 1 by 2 का स्क्वायर है ना. So whatever the ratio of slit width is there, that is ratio of intensity, directly proportional. More slit width, more intensity goes through the slits. Do we have the time? We have the class up to 7:15. Am I right? Moving to the next question. Hmm.
कैसे करेंगे इसका? तो β2 अपॉन β1 क्या होगा? λ2 डी बाई डी तो चेंज ही नहीं हो रहा है। β2 निकालना है हमें। β1 इनिशियल फ्रिंज विड्थ इज गिवन 1 और फाइनल लैम्डा इज 6000, इनिशियल लैम्डा इज 5000। β2 is 1 into 6 by 5, that is 1.2 mm. तो C option, only wavelength ही चेंज हो रही है। Other things will get cancelled. Okay. This path is n times of lambda, and this is your n plus 2 times of lambda, where n is the whole number and lambda is the wavelength. Taking the central fringe as 0, center fringe पे path difference 0, ये बोल रहा हूँ, symmetrically placed है। What is formed at x? X पे क्या बनेगा? Will it be dark fringe or bright fringe or none of that? If it is dark, which dark? If it's bright, which bright? पार्ट डिफरेंस से पता लग जाता है ना। पार्ट डिफरेंस में पहले पार्ट डिफरेंस निकालो। Q से x का पाथ माइनस P से x का पाथ, दैट इज n प्लस 2 लैम्डा माइनस n लैम्डा। तो n लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 लैम्डा आएगा। 2 लैम्डा मीन्स सेकंड ब्राइट, 1 लैम्डा मीन्स फर्स्ट ब्राइट, 2 lambda means second bright. Therefore, C option है ना। 2 lambda means second bright, 0 lambda means center bright. No part difference, zero part difference. Getting? Is it okay? Are you there? Yes, sir. All right. Easy question. What will be the answer of this?
इसको तो डबल कर दिया 2d, इसको आधा कर दिया, तो 4 lambda d by d, that is 4 times of beta. D option will become 4 times. Fringe will become 4 times wider if you take the screen backward and bring the slits closer. I max upon I minimum 9 दिया आपको. ब्राइट पिन मैक्सिमम, डार्क पिन मिनिमम. तो अंडर रूट वाला फार्मूला लगा के रूट ऑफ I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ I1 माइनस I2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके I1 बाई I2 निकालेंगे. वो आपका 4:1 आ जाएगा. और एम्पलीट्यूड का रेशो A1 स्क्वायर बाई A2, अंडर रूट लेंगे तो 2:1. तो ये और ये आंसर आएगा. 2 ऑप्शन आ रहे हैं. कैन यू सी है? आपको I max एंड I minimum दिया हुआ है 9, which is equal to this. तो रूट ले लिएगा दोनों तरफ. It becomes 3. यहाँ से स्क्वायर has gone, क्रॉस मल्टीप्लाइड, solved it for I1 by I2, रूट I1 by रूट I2 आपका 2 आ गया, स्क्वायर कर दिया, it is 4:1. तो B ऑप्शन. एम्पलीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ I1, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज I1 by I2, तो उसका जो अंडर रूट लेंगे तो 2:1 बचेगा. डी ऑप्शन. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ. कंटिन्यू टुमारो. एनी डिफिकल्टी यहाँ तक? No, sir. ओके, थैंक यू.